देखिए वो तो है, वो तो उसको लिस्ट ही ना करे फिर। क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे कैंसिल द एनलिस्टमेंट का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। जाना सिर्फ अगर मैं ये मान देखिए अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रखें तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो, वो कहेगा कि मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर पॉलिटिकल पार्टी कल नहीं लिखा है कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, लड़ सकेगा सब। मैं कह रहा हूँ स्टैच्यूट आइन में नहीं पता नहीं किसी पार्टी बनाना चाहिए सब आइन पीछे रजिस्टर की आ रही है, ये बकायदा चैलेंज हुआ था जी जो आप बात कर रहे हैं, आइन पीछे रजिस्टर की आ रही है, ये बकायदा चैलेंज हुआ था जी जो आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है। मतलब जैसे लाइसेंस भी मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं, ये बात सही है। मतलब जैसे उसको भी इंतजार गाड़ी चला के उसकी शक्ल नहीं पसंद आ जाती, मैं लाइसेंस नहीं, ये बात सही है। मतलब जैसे लेकिन वो हर जगह दुनिया में ऐसी हुआ है, तो ये दूसरा ये बाहर कर रहा हूँ ऐसी हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर, तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों को उन्होंने बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद ही खत्म किया आपका। मेरा मैं वही दिखाऊंगा कि आपको आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा, मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल, दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल, आई शो यू हाउ। वो मे बी, तो वो दे कांट डू इनडायरेक्टली, then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. लॉ डजंट अलाउ Inactions. लॉ अलाउ नहीं करता, लॉ कहता है सर्टिफिकेट दे दिया Consequence of your आपको, own. फिर हम ठीक है आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है, जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और अब आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट, सो नाउ आई वाज जस्ट आई एम रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है, या ऐसी बात है वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे, टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे, अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154, 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का सेक्शन कम से कम in the articles that we have read 208, your point is taken, it is not been specifically provided. They are saying it is, ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now, sir, having said that, I will like to come to my second ground, which is कि under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to
section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर। हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख्वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ही सोचा ही नहीं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी। आप ना जाइए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया तो दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं करते आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है इन इफेक्ट इन माय रीडिंग ऑफ द लॉ। नहीं, यू कैन से दिस इज व्हाटएवर इन योर ओपिनियन अल्ट्रा वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन, सी सबमिट इट एंड सी व्हाट दे डू विद इट। इट इज नॉट अल्ट्रा वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वो बात अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। वो बात होगी मैच्योर ऑन 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it, उसमें ऑब्जेक्शन लगा दें बेशक। मैं आई एम जस्ट रेफरिंग टू अ लॉ कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, ईच वन ऑफ योर कैंडिडेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन विद, अगर इफ यू गिव द सॉल्यूशन नाउ दैट मींस वी आर डिसाइडिंग द इशू जी, बट यू कैन कवर योर बेसिस बाय डूइंग समथिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ जी। दूसरी चीज से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने, यू कांट फील द कैंडिडेट, राइट, बिकॉज अ कैंडिडेट हैज टू कम अंडर आइदर योर सिंबल or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things, what is a common symbol? Common symbol means your lordship. क्या मतलब, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती। मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge, मैं समझना चाह रहा हूँ जी। सेक्शन 67(3) ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? सर बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी कैन ओनली फील्ड कैंडिडेट्स अंडर अ सिंबल। ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। दे आर फुली अवेयर ऑफ हाउ टू कीप अ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द पॉलिटिकल अरीना। पूछ लेते हैं मखदूम साहब से, कैंडिडेट को सिंबल क्या देंगे फिर? वो कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा। वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे एक कैंडिडेट तो मैं बुलाएं। इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard. Simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments.
They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. अगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन. how will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. Election हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल सर. चले ये भी सही है. आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने दी एक सेकेंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज पीटीआई कैंडिडेट. आई कांट फाइट पीटीआई कैंडिडेट. आई फाइट विद माय ओन हु यू इंडिपेंडेंट candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, बट नॉट पीटीआई. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It's an entity. Suppose जी कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सर मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है एक्स पार्टी कर लें आप. लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट लॉ. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे. एक्स पार्टी जो भी है, पार्टी एक्स पार्टी वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ पार्टी. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर. नेचुरली हाँ जी वही है सारा. बट डज इट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देखिए बराबर में क्या हुआ. सर देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने. अगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें, ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट इफ द सिंबल हैज बीन टेकन, द पार्टी इज डिसफंक्शनल. द पार्टी कैन नॉट फाइट द इलेक्शन. दैट्स व्हाट द लॉ सेज. समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट नो सर. होगा ये कि लेट अस जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा. नहीं पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट डजंट लाइक टू गिव ओपिनियंस ऑन मैटर्स व्हेन नोबडी हैज डिसाइडेड द इशू. इलेक्शन कमीशन हैज नॉट सेड दैट, हाई कोर्ट हैव नॉट सेड दैट. सो इफ वी आर गोइंग टू, वी कांट से दिस थिंग. हर कैंडिडेट को अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलग मिलेगा. अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल. ये वी आर गोइंग ऑन स्पेक्युलेटिव. This is what it is. It is a fact. 67-3. आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं. सर आप मेरी पार्टी में तो है ना. नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें. There is an expanding law. I am arguing on one point. I am just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी.
अच्छा, sorry. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, so he may have to go. right now. I will continue. Ji. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67 3 के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ. So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics. ये लोग डिफेक्ट कर जाते हैं. वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है. उसको मजबूत किया था. नहीं, खत्म करा दिया. खत्म हो गया था. नहीं, आपने तो आप ही की तो पिटीशन थी. मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर. नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की. जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एड का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है. सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा. मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते. आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी. निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात. आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ. तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस वही होगा. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है. बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज समथिंग दैट इफ यू टेक दैट अवे, माय सबमिशन इज कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है. पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. ये मैं कह रहा हूँ. इधर आए. एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट. नहीं, आपको दिया. आई अंडरस्टैंड. आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है. जी मेरी किताबें क्यों? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट. पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली बाय आवर कोर्ट्स. और जो पहला केस इस पे था, योर लॉर्डशिप विल नोट, was Madhudi's case. Your Lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, इट डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. Now, your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your Lordship can turn to page 734, or your Lordship can just note for the time being page 734 and 778.
this started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidji challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी, वो तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. अच्छा सर, इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी, वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह है, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. If your lordship look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर दें जी, स्लो डाउन हो गया जी. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this?
जी, Why are you telling us जी, this? I am telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating आप सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं। मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है, वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा ले, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर में? मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दिया। नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल, फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी अपने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक। दिखा दिया आप, मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। क्वेश्चन इज नहीं, देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीज जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लॉ, द स्कीम ऑफ द लॉ। कैन अ लॉ प्रोवाइड कि आप सिंबल ले लें, कैन इट बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे? क्योंकि आप सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चले उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और Empower supports students within 1 or 2 years of graduating and students who are about to begin a 1 or 2 year program. We support undergraduate and graduate students from around the world. You also must be admitted to or attending one of our 400 plus approved schools in the US or Canada. Not admitted or attending yet? You can still get the process started so you're ready to go when the time comes. करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर। जी, मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात। मेरा पॉइंट बताएं ना अगला। सो ये पॉइंट हम समझ गए, वी टेकन इट ऑन बोर्ड, यू रिलाइड अपॉन बेनजीर भुट्टो केस, इट्स डील्स विद दिस मैटर कॉम्प्रिहेंसिवली। करेक्ट, एंड उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर स्टोर बाय द रिजर्व्ड सिंबल्स, प्रोबेबली बिकॉज द सिंबल गेट्स आइडेंटिफाइड विद द पार्टी एंड इट हेल्प्स इट इन मेंटेनिंग इलेक्शन अपील्स एंड प्रोपेगेंडा, and the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul, and without them the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Their case is you,
not their case may be me, उनको एनमिटी मेरे साथ अगर है, अगर एक्चुअली डीफ्रेंचाइजिंग आप खुद इलेक्शन अभी करा रहे हो, recently फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी a few days ago. I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। एंड आर्टिकल 62(1)(f आपने कहा कि वो 62(1)(f जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ, हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी, इट कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। मेरा जजमेंट था। अभी आपने जो 62(1)(f का दिया शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा वो वाला 62(1)(f ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके मैं समझ कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल। एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI और जस्ट बिकॉज दे वांट टू कीप। You withdrawn the allegation Okay, I withdraw it. If you want to take it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है। यू हैव टू गिव द सिंबल। और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन वुड बी आई थिंक टू serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें। Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी सर, you wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं। उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें। उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ठीक है, you are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution
जी one of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं सर। हिस्टोरिकल नहीं है तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। करेक्ट। देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले। अब आप अभी आपको बिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई। अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से। इनका कहना ही होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं। तो एक तो ही होगा। देखिए अब देखिए पूरी बात कर लूं, धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया। हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं, इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली, आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में। अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराओ, आपने कहा नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, यानी कैसे किया सदर ने ऑन दी एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन करा लें, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग भाई फ्रॉम। इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूद्दीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको ऐसे हमें बहुत वजूद्दीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम व्हाटएवर द सिचुएशन। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई, इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. बस you should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास भी एब्सोल्यूट पावर था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो एब्सोल्यूट देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं ये तो अब मेरा मौका आ गया, but your lordship। चलिए खैर कोई, अब तो आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17. और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में, दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट, सो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एज योर लॉर्डशिप राइटली सेड, हैव बीन हर्ट and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत एलेबरेट जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, एंड दैट वाज ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स। एंड वो कॉन्सेप्ट लेके आया फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स भी एक चीज होती है, एंड दैट हैज टू आल्सो बी रेड इनटू आर्टिकल 17। और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रीएम्बल में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537,
And then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Mohammed Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए है ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो दो पावर सिर्फ डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. नो, आई एम नॉट. दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट, सर. ये 200 दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी. इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस. मैं 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट. का तो इशू यहाँ नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में सेक्शन को. सर मुझे नहीं करने की जरूरत. मैं तो कह रहा हूँ 215 है. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675. ठीक, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली A court of law can be abolished. By law. जी. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil dispute. आर्टिकल 219 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, सच अदर फंक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ मजीद शूरा पार्लियामेंट. जी आपने पढ़ लिया. इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो अगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा.
आईनी दायरे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है. to the extent of general election. एक्ट to the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो दर्ज आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं. जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है. मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं. योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. अभी सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब योर ऑनर, हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और नहीं आप यहाँ ना बात करें. जी क्या? My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. योर ऑनर, मैं सिर्फ we are hearing नहीं देखिए ना, फिर अब ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का, भाई अभी हमने कहा ना, if they don't Your fix it, Honor, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, योर ऑनर, सिर्फ प्लीज देखिए वो we don't want to detract. योर ऑनर, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. to fair trial code, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं.
ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। दे जस्ट डिसाइडेड, देयर हियरिंग हुई, क्वेश्चंस पूछे और ने कहा जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अपॉइंटमेंट्स। अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, एंड एक प्रॉपर ट्रायल करें इफ दे हैव द जुरिसडिक्शन, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया। Can't be done on just one person standing up and saying मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा। जी सर, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. The Lordship, territorial jurisdiction पे a lot of judgments have come by now and the law is very, very ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए, ये इसका जवाब देते। जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, सवाल पूछा। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर। वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं। वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी, होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उसके ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वुर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी है, वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी, मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूँ। अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है, वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू, अगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया, अपना दे दिया, वो उनको देखें क्या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट की, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन है उसकी बात करें। जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट, वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए जी ड्यूरिंग द सबसिस्ट, वो लिस्ट ऑफ द पेशावर, वो लिस्ट नहीं लेके गए, दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो
ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी? सर कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट तो कंकरेंट कोई इशू चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर। ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? ना व्हाई? Because that was a concurrent finding and it was by choice. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, एक तो पेशावर में था और three of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के। So अगर परेशान के होते तो आप परेशान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। नहीं बट लाहौर is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी इट वाज, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि इट वाज आई हु सॉट द एडजर्नमेंट। आई हैड एक्चुअली गॉन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर टू अटेंड दोज केसेस, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट जब वो लगता है तो वी विल डू दैट, बट it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक just telling you, according to Mr. Mahdum Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one। नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why। नंबर बताता हूँ आपको, 11171203, which was clubbed with WP 332 of 2018। Sir, if my इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर। If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सिर्फ उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर, सिर्फ 3-4 है ना। एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो बात, वो आइडेंटिकल नहीं है इसके। दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded. Candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine कि you want to continue. Sajwad साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ
लड़ाई भी है शायद। आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन। So I will leave I will not, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं. But if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's He's time. not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying. But as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the नहीं, independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, So जो मैंने आपको बता my दिया। submission is this: on that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. नहीं, on this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं। वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. नहीं, कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका। सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे। वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का, या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं। अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर है लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं। जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट है, क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68। मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट। नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये, आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें। मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलेगा बात है तो वो पढ़ लेना। ठीक है सर, मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें। कौन सी? PLD 2009 CLD 1498, ये LPG एसोसिएशन केस है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, that also your lordship will see, but I just wanted to read one line to ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी, वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं। आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not, आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटिव लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूँ, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक maybe I'm not that clear. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं, ठीक, to me each high court is a supreme court of that province. ठीक। Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two,
if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe sir, सपोज एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए। अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी, उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ। ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल। वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन। पर सिंह, जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया फिर आप उस पर उधर से हट नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल सही। अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन। इट इज वेरी स्ट्रेट, आई एम वेरी क्लियर हियर। इन योर केस व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन? कॉज ऑफ एक्शन इन द फर्स्ट केस इज माय फर्स्ट इलेक्शन। इलेक्शन इज द कॉज ऑफ एक्शन। नहीं सर, इलेक्शन तो इतना हर इलेक्शन होता है सर। इफ आई एम सपोजिंग मेरे नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं रिजेक्ट, सेम नॉमिनेशन पेपर ऑन द सेम ग्राउंड हैव बीन रिजेक्टेड इन मियांवाली और इन इस्लामाबाद और इन लाहौर, आई विल फाइल 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes, right, and there could be a conflict ultimately in but you can't go to Peshawar from here. Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आते हैं तो उधर जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं सर। या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है। मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं है, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। सर लेट मी पुट इट दिस वे, Mr. Gohar is he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party है सर उस केस में पेशावर वाले. तो इशू है. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. जी. Après-vous, क्या है फ्रेंच में क्या है? Après-vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed as a other. चलिए खैर, आप ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था। चलिए मैं समझ गया उनका, but my response is this कि it's not the same cause of action and they are different parties and they are entitled to file in Peshawar and Peshawar has the territorial jurisdiction, so simply because there is another case pending in the Lahore High Court should not. जी ठीक जी. Now sir, moving on. 645. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं जी। बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था, वरीड आई कैन मल्टीटास्क। वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है। जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है। पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है। नहीं, वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे। नहीं, आप तो हैं ना सर, आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर इट विल बी मिसजॉइंडर बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। चलें। सो ये तो
I think is a very I mean I am देखिए very ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not party. Imran Khan is not party here. देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो से he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे Versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. तो वी हैव टू सी द सेम इश्यूज रे. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि फिर आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since inter-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. ये तो आपकी अपनी इस्तदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. मैं देखिए सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन सर मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी. हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी. नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन. ये बात है. ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं. Nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say. Ji. That the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं अब तो सर देखें. नहीं देखिए, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन गलत है, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला. If I persist with the case, आप पे नहीं है अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी. कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सबके मुताबिक था. ठीक है, उसका क्या मतलब होगा? वो लोग जो इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की. खुद इलेक्शन सही हो गया तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? तो वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो बिल्ड हो, आप फरमा रहे हैं ना, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन ऑर्डर इज सेट असाइड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. आई विल नॉट बी एट ऑल, दैट वुड बी वेरी ग्रेट ऑफ लॉ. जी. सो आई एम, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इज अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट. हैज ही बीन रिमूव्ड एज चेयरमैन? जस्ट वांट टू नो एज अ फैक्ट. वो
in fact, Election Commission issued a notice which we've challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you've been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. नहीं, we challenged it. ये तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया नया बना दिया सर, बिकॉज ऑफ दैट। सो आई मीन क्वेश्चन में समझ नहीं आई। नहीं तो फिर तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी। फिर सो दैट इज आई एम सेइंग, आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म। गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम आए नहीं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का। बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ। सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा, इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं एक, और वो नहीं हटेंगे, वो कहते हैं कि मैं नहीं। चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है, पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल, यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल। तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स राइट। इफ ही डजंट then he doesn't. Okay. So that is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोला? Political parties, 175 almost. And out of them, not a single one intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना, इसलिए चले आप ये कह सकते हैं। प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए ही नहीं है, बताएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई, प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराना है, करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये, आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना से जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं पूछ दैट इज नॉट द इशू। नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताए ना, वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाए, इनकी पे लगाया पेपर, मैंने हाईकोर्ट के सामने लिखा था। तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक, मैं अभी है 853 मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है। बता दीजिए। इन व्यू ऑफ सच प्रोविजंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commission
commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के एक्ट कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 2015 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने, ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी बताएं पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर ये किस पार्टी में? उस वक्त PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में प्रॉब्लम, कौन सा पार्टी के? अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। सो ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं आर्गुमेंट्स में। वसीम सजाद साहब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akhtas Guraya, wherein the petition, the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad and Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers in issue and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया है जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ भाई जी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी इसके तहत हुआ जी, उसके तहत इट इज। चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस जी। So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा ले, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। थोड़ा ये भी वही है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़े। मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर यू सेइंग के whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ आ गया। यहाँ तो वो भी नहीं, वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है। पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, बट would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, देखिए ना, nor can they establish elections were not held. जी, they cannot
can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन. बारीकियों में चले गए. तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है. हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स पे बैठे रहे, फिर कोई आया नहीं. बट आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. Your Lordship, next point is where's the attorney? नहीं कुछ ना के attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक? जी, Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं. मिस्टर उमर अयूब इज नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी. मिस्टर असद उमर जो हैं सर वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, एंड आफ्टर हिज डिटेंशन ही केम आउट एंड ही केम ऑन द टीवी, ऑन द नेशनल टेलीविजन, एंड ही अनाउंस्ड दैट आई एम resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी. क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign किया, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? he as an office holder. पार्टी भी छोड़ दी. I've been informed that he's left the party now, but so the point being, He was the star of your party. जी, Star थे ना? yes, he was, I think, and I mean जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is, हाँ? it is correct. फिर उन्होंने तो रीजन दिया है. जी, उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है, Following the events of May 9th. ठीक, उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए. बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन. जी, तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर. जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं जी. व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? ही मीन्स क्या नाम है इनका? असद उमर. असद उमर. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. But he opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर, बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी से और ने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपकी मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश हो इलेक्शन कराया, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे. फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको खुश मतलब इलेक्शन कराए सर. सो सर, टू सम अप, कीपिंग यू द माइंड and all that. So basically, I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP
and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं अब सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट दे दें और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें एंड गिव अस द चांस टू एक्चुअली प्रेजेंट बिफोर यू द एविडेंस एंड ऑल दैट. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स देयर हैज बीन डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज नोबडी एल्स हैज बीन एवर चैलेंज दैट. इसको आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टीज को उन्होंने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. आप उसे पढ़िए. उसमें मैंने कहीं मुझे पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप सर देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है. मैं आपका क्या ने पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन. जी ठीक है. अटेंशन इज ड्रॉन सो एंड सो कंडक्ट. सर अगर ना करूं मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ना नहीं करूंगा इलेक्शन तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज. कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना जी. चलिए वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं. एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना की एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूँ कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना. चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया. बट मैंने करा लिया. आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2, 3, 4, 10. ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन की वो ये गलतियों में इस तरह प्रूव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में. दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन. अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है. पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है. उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं. फिर ये कौन पढ़ चेक लीजिए. करेगा? ठीक पढ़ लेते हैं सर.
So Who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला, आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया, मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, लॉर्डशिप चले, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं, तो ये बहुत। अब हाईकोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है ना, आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज अब्सर्ड, आई स्टिल इंसिस्ट। पेज भी 25 I will है, start reading पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned पैरा 10 page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it We is agree 100%. We agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with मैच में नहीं कर that. सकता आगे जाके। I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं, आपकी पिटीशन कहाँ थी सर? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है, एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will deny. Of course, we don't want to do any such thing. सर 11 पढ़ दूं जी आप, jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave हमने that. पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? वो डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर, एंड आई स्टिल से कि इट इज अ वॉइड ऑर्डर। सो इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। नाउ लेट अस लुक एट 15 पैरा बिफोर एम्बार्किंग। आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? हाँ जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, हमने ही कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस। पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Mohammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is
is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the 18 पे आ जाते हैं 18 पे आ जाते हैं ठीक है 18 पे I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए ये जो आपने अभी पढ़ा ना बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of ये which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. या म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it वहाँ exists. के तो इफ इट इज तो उन्होंने आपको शोकॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर अब नहीं मैं सिर्फ जजमेंट की. अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. with respect it is म्यूचुअली not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With एक respect तरफ it is तो not, कह रहे sir. कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honorable judges of Existence the- of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable आप पढ़ें, judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of ये तो jurisdictional जनरल fact, बातें हो रही है ना कोई it can specific decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction in vulnerable provided ये तो और आपके अगेंस्ट हो गया ये. चले अगेंस्ट नहीं हुआ सर. ये लॉ है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicative fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है. आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no tazad and for saying frankly, ये बता दें. this is the law. ये तो law कह रहे हैं चले कि चले law जो बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा खैर यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल. नहीं बट लॉ भी बता रहे हैं. No, no, आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. ये पढ़ते हैं सर. ये पढ़ते नहीं सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of an election political party. It is envisaged by Section 2. अब आप देखें अब इतना टाइम तो नहीं है ना. अब जरा सिर्फ अभी बता दें ये पढ़ने से मैं ख्याल जगह जाए शख्स ये जजमेंट के चैलेंज की हुई है इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि आप इसी देख को लें फिर ना. आगे पीछे नहीं, करना है. बिल्कुल देखें आप. जी. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. ठीक है तो हम ये एक या
या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें एक दो तीन सवाल हैं जी। पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखे जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें, मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है, ते गुनहगारां दी दलदल भी है, उन्होंने कहा इनके पास। पर दुनिया का एक बड़ा पक्का असूल है कि जिथे गुनाह ते इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया किसके पास जुरिसडिक्शन है। पॉइंट आप नोट कर लें, मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी तो बहुत सरसरी तौर पे देख रहा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा जी। ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं आप पूछ लें, नहीं हम आपको, आप देखिए आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर जी। अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे जी, पेपर बुक पे जी, ठीक है जी। इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी, that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे। There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a political party. The same void. जी, सही है ना जी। अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए। आपको अब कौन-सी डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि माय इलेक्शंस वर गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात। जहां तक मेरा है, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था। ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, मैं देना चाहे अभी दे दें। मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ। चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए। इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग, इट इज रिस्पेक्टिव प्रेड, मैंने एक प्रे किया सर कि होल्ड एंड डिक्लेयर दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर इज विदाउट जुरिसडिक्शन। So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, primary declaration है। I think the most important declaration on the election जाके की मीटिंग के बाद में हमने आम आपके साथ बुनियादी बात कर चल रहे हैं। रब के अरदास करी कि तेरा मेरे नाम से ना ही हो, और जब भी मेरे तब मरता फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में। ये भी आपका मौके हो सकता है, मगर ये आप मौके ले नहीं रहे। नहीं ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस, इशू, सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें। फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए, पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल। ठीक है सर। मैं आई जस्ट कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ, लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर। आप ये पढ़ लेना, पहले पे पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं, पढ़ लें। 25 पढ़ लेना। पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर रहे हैं? The survey of the case law stated above
and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा They cannot be मेरा भी denied केस ये है on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए because virus तो under challenge है ही नहीं. अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law वो उसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation आगे चलें 3 लाइन और पढ़ लीजिए. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है. अभी सुनिए एक मिनट. पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया. जी. पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए. जी. जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका. वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो. 215 में तो पूरा केस चला आपका. 215 में गलत चला दिया ना सर. इन्होंने गलत चलाया. इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ 215 का. मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है आप खुद देखें ना. वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है. 215 में तो पूरा केस मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं. 19 ऑनर्स पढ़ लेते हैं. 215 जब तक है जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो. जी. तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको. सर जहां तो फिर तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स. माय फर्स्ट पॉइंट वाज अच्छा व्हाट वी डू इज 215 जो था सेक्शन एक सेकंड. we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back आधा घंटा. आधे घंटे में. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू. Additional submissions. We coming back. Okay.